Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Everybody, please join the lecture fast as soon as possible. Good evening, good evening, good evening to all. Good evening, good evening, good evening. चला चला लवकर पटपटाया. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we will discuss a small chapter from pharmacology. Good evening, Devesh. We will discuss a small chapter from pharmacology, and that is nothing but the skeletal muscle relaxant. So we was discussed about the drug acting on ANS. जो drugs acting on ANS है तो पूरा अपन ने देखा है. So we have seen the sympathomimetics, sympatholytics. We have seen the parasympathomimetics, parasympatholytics, right? Now a short chapter is there, so that is nothing but the skeletal muscle relaxants. So today we will see that chapter, skeletal muscle relaxants, right? So actually there are two type of muscle in your body. First one is known as the skeletal muscle and second one is known as the smooth muscle. So there are two types of muscles basically in the body as far as the physiology is concerned. So first one is skeletal muscle and second one is a smooth muscle. There are two type of muscle. जैसे मैंने बोला है skeletal muscle एक type होता है, दूसरा होता है smooth muscles. Skeletal muscles they are supplemented with the skeleton, and smooth muscle they are in a visceral organ, like for example blood vessels. They are in a GIT, they are in a sphincters, they are in a viscera. Okay, so unwanted contraction of smooth muscles, they are also known as a spasm. They are known as a spasm. And unwanted contraction of skeletal muscle is also known as spasm. But if the contraction is so far, okay, so muscle should be flexible. Muscle should be flexible. Now if it is not flexible, it is known as a spastic. It is known as a spastic. So muscle spasticity means what? If muscle is not flexible, आपका muscle flexible नहीं है, that is known as a spasticity. So skeletal muscle relaxants, they are the drug which are used to decrease the tone, decrease the spasticity of skeletal muscles. यहाँ पे सिर्फ skeletal muscle का ही relaxant है. Okay, so skeletal muscle relaxants, these are the drugs which are used in the spasticity caused by different issues. For example, ये spasticity क्यों आता है? आपके मसल में अकड़ क्यों आती है ना? आपके मसल में अकड़ क्यों आती है? Spasticity मतलब अकड़. Why there is a spasticity in the muscle? Now there are different reasons why there is a spasticity of muscle. One of the reason is nothing but the if there is a damage to your sinus. Okay, then if you are suffering from neurodegenerative disorders, like for example cerebral palsy is there, then muscular dystrophy is there, ataxia, different type of ataxia, then any injury is there, if there is any surgery, post surgery spasticity is also there. So if there is a surgery to the CNS, spinal cord surgery is there, so that may result in the spasticity. अगर किसी को हिमेटोमा है, मतलब ब्रेन में ब्लडिंग का क्लॉट है, उसका उसके बाद में उसको स्ट्रोक पैरालिसिस हो गया,
So in that case also there is a spasticity. Muscle spastic क्यों होता है? Because of these reasons: degeneration of neuromuscular junction, cerebral palsy, neurological disorders like neurodegenerative disorders like multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, then ataxia, then cerebral palsy, right? So these are the neurodegenerative disorders where there is a spasticity of muscle. Muscle is not flexible, so it is a spastic. There is always, that's why in that case you have to use muscle relaxants. Doctor used to prescribe muscle relaxants. So these are the drugs which will act selectively on a skeletal muscle, and they will decrease the spasticity of muscles. That's why they are known as a skeletal muscle relaxants, right? So we'll see it now. Skeletal muscle का एक शॉर्ट में आपको ये होना चाहिए क्या? So you should know about the in short skeletal muscle. We are going to see in the detail when we will see the muscular system. At that time I will tell you, but before that you should know these things. कि skeletal muscle, so they have a outermost membrane known as a there is a on a skeletal muscle there is a outermost membrane, okay, and these are the muscles. So in the skeletal muscle you have actin and myosin fibers. Actin myosin नाम के प्रोटीन फाइबर होते हैं स्केलेटल मसल में. And outermost, okay, outermost layer is known as a then this skeletal muscle is supplemented with a nerve. So this one is a neuronal ending. ये neuron होता है, and these are the dendrites. These are the nerve supply to the muscles. मसल के लिए नर्व सप्लाई है. So this one is known as a motor end plate. This one is known as a motor end plate. Now the synapse between the nervous system and muscle is known as a neuromuscular junction. जो synapse है, जो connection है, the connection or the synapse or the junction between muscle and neuron, that is known as a neuromuscular junction. And from neuron the nerves are supplemented to a muscular fiber, right? So whenever there is impulse coming from neuron से कोई impulse आता है, neuron से कोई stimulus आता है, ये stimulus spread किया जाता है all over the skeletal muscle और वहाँ पे contraction क्या होता है? There is a release of acetylcholine. So there is a release of acetylcholine over here. यहाँ पे acetylcholine release होगा. Now acetylcholine will act on a muscle cell. It will increase the permeability of muscle cell for the sodium ions. Normally outside the muscle cell there is a positive charge, inside the muscle cell there is a negative charge. Outside sodium होता है, inside potassium होता है. When acetylcholine is released due to stimulus, so it will increase the permeability of this muscle to the sodium. Sodium बहुत सारा अंदर जाएगा and that will cause depolarization, and again because of that depolarization calcium will also be released from endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum. जो मसल सेल का sarcoplasmic reticulum है उसमें से calcium रिलीज होगा. That calcium will interact with the actin and myosin filament of muscle, which will bring about the contraction of skeletal muscle. That's how it is a simply physiology. We'll see, don't worry. Physiology. Before that, let's see. So drugs which are used to reduce the unwanted spasm or spasticity without interfering with your consciousness or normal voluntary movement. So drugs which are used to reduce the unwanted spasm or spasticity of muscle. Spasticity मतलब क्या है? Muscle should be flexible. If it is not flexible, that means muscle is a spastic. So that may spasticity क्यों आता है आपको? It may be due to the injury to your CNS or any surgery of CNS or any surgery of spinal cord or neurodegenerative disease. For example, जैसे multiple sclerosis, ataxia, cerebral palsy, है ना, muscular dystrophy. So muscle becomes flexible, muscle become rigid, or there is a spasticity of muscle, right?
So the drug which are used to decrease the spasticity, which are used to reduce the spasticity or spasm of skeletal muscle without affecting the consciousness or normal voluntary movement of a individual, known as a skeletal muscle relaxant. ये skeletal muscle को relax करेंगे, है ना. So mostly they are used in, जैसे आपको होता है, आपको अगर कोई मसल में खिंचा हुआ गया, मांसपेशी में खिंचा हुआ गया, तो अपन उसको सिंपली स्प्रेन बोलते हैं. So if you are getting a strain, okay, pulling out of your muscle, so in that case muscle relaxants are used. So these are the drug which reduces the unwanted spasm or spasticity without affecting the consciousness and normal voluntary movements of the body. Now what is meant by spasticity? So as I told you, the spasticity means what? So it is due to the increase in the skeletal muscle tone associated with the decrease the muscular power due to damage in the corticomotor neuronic pathway. For example, in case of cerebral palsy, multiple sclerosis, CNS injury, stroke, or okay, क्या होता है यहाँ पे? So it is due to the increase in the muscle tone. Normally in your muscle there is a certain amount of tone. There is a certain amount of tone, normal muscular tone. आपका muscle, your muscle is not fully relaxed. ना आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, रिलैक्स बैठे हो, लेकिन your muscle is not fully relaxed. So it has a certain kind of tone known as a basal tone. Okay, तो basic tone रहता है muscle में. So spasticity is due to the increase in the muscle tone associated with either decrease in the skeletal muscle power, that is due to the damage to the corticoneuronic pathway in a cerebral palsy, multiple sclerosis, CNS injury, stroke, etc. etc. On the other hand, spasm मतलब क्या होता है? So spasm is nothing but the involuntary contraction of muscle or a group of muscle, usually accompanied by pain and limited function. तो spasm क्या होता है? Spasm is nothing but the involuntary contraction of muscle or group of muscle with the limited functions, okay, or and associated with the pain. तो आपको अगर आपका है ना, आपको अगर ज़्यादा आपने कुछ अलग पोजीशन में सोए तो आपके जो नेक होता है, नेक में स्प्रेन आ जाता है ना, और आप थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हो लेकिन लिमिटेड कर सकते हो, पेन होता है. दैट वन इज अ स्पाजम. सो स्पाजम एंड स्पास्टिसिटी इज अ डिफरेंट. स्पाजम एक इनिशियल सिम्टम बोल सकते हो आप, एंड स्पास्टिसिटी इज नथिंग बट द परमानेंट सिम्टम. स्पास्टिसिटी इज बिकॉज ऑफ द neuromuscular degeneration or neuromuscular degeneration or any surgery of nervous system or any loss of neuron, or it may be due to different diseases, है ना, cerebral palsy, multiple sclerosis, muscular dystrophy, ataxia वगैरह. Now spasm is nothing but the involuntary contraction of muscle or group of muscle accompanied with the pain and limited movement. Now drugs which are used to decrease the spasticity and spasm, they are known as skeletal muscle relaxant. So they may act either centrally. वो centrally acting drugs है first class. Okay, we are going to see the classification, don't worry again and again. Centrally acting drug, so these drug act via central mechanism. They are either most of them are a GABA releaser. Most of them are GABA releaser. So baclofen is a centrally acting है ना स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. बैक्लोपेन इज अ गाबा बी एगोनिस्ट. जैसे डाइजिपाम वगैरह जो है गाबा ए एगोनिस्ट होता है, जैसे बैक्लोपेन इज अ गाबा बी एगोनिस्ट, है ना. सो बैक्लोपेन इज अ गाबा एगोनिस्ट सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. बैक्लोपेन, बेंजोडाइजिपिन, टिजानिडीन. टिजानिडीन इज अ सेंट्रल अल्फा टू एगोनिस्ट, टिजानिडीन. तो सम ड्रग आर acting centrally. Now drug acting peripherally मतलब क्या? These drugs they will act on a neuromuscular junction. So neuromuscular blockers. We are going to see all that. Okay. Then again drug directly acting on a muscle end plate. So those drug which directly act on a muscle end plate, for example dantrolene. बाकी कुछ drugs उसमें के पार्किंसनिज्म में यूज किए जाते हैं. We'll see the classification. Don't worry again. देखो anticholinergic drugs, they are classified, we have seen. So you know acetylcholine as a
टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, यहाँ पे पहला रिसेप्टर होता है, तो एसिटिलकोलिन हैज अ टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, फर्स्ट वन इज अ मस्कर्निक रिसेप्टर, सेकंड वन इज अ निकोटिनिक रिसेप्टर, right? So nicotinic receptor and muscarinic receptor. Acetylcholine has a two receptor, muscarinic receptor and nicotinic receptor. So anti-muscarinic drug we have already seen. Now nicotinic receptor, so those drug which will block the nicotinic receptor, okay, they are useful as a skeletal muscle relaxant. Now nicotinic receptor कितने टाइप के होते हैं? There are two type of nicotinic receptor, NN and NM. NN they are known as a, they are present in the brain, न्यूरॉन में आता है. So nicotinic receptor local in the neuron, okay, so they are known as a ganglionic blockers. They are known as a ganglionic blockers. So they are used as a antihypertensive drugs as well as skeletal muscle relaxant. Ganglionic blockers, okay. Now neuromuscular blockers, they will block the neuromuscular junction. They are known as a true skeletal muscle relaxants. इसमें देखो neuromuscular blockers, they are of two type. So first one is a non-competitive depolarizing type neuromuscular blocker. बहुत ही important है, non-competitive type depolarizing type of neuromuscular blocker. In that examples are nothing but the succinyl, choline, decamethonium. Succinyl, choline, decamethonium, they are the non-competitive depolarizing type of neuromuscular blocker. अपन क्या होता है डीपोलराइजर, नॉन डीपोलराइजर, बोलूंगा आपको, यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद हो. देन इन द सेकंड यू हैव कॉम्पिटिटिव नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. सो इन दैट यू हैव अगेन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग, इसमें सब लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में आता है डी ट्यूबोक्यूरारेन, देन पेनक्यूरोनियम, डी ट्यूबोक्यूरारेन, पेनक्यूरोनियम. देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है आपका वैक्रोनियम एंड एट्राक्यूरियम, ये सब क्यूरारे अल्कलॉइड्स है. देन शॉर्ट एक्टिंग में आएगा आपका मेवाक्यूरियम एंड रेपाक्यूरोनियम, मेवाक्यूरियम, रेपाक्यूरोनियम. सो इट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, मेवाक्यूरियम इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग. चलो ये अपन फिर से एक बार देख लेंगे, डोंट वरी. अगेन यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ओवर हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलेशन. क्वेश्चन बहुत बार इसके ऊपर आता है, स्केलेटल मसल रिएक्शन, स्केलेटल मसल रिलेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है. फार्माकोलॉजी में ये दो चार चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, देन एडवर्स इफेक्ट, देन इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड uses, toxicity, antidote. These things are important. ADME, right? So skeletal muscle relaxant as per the KD Tripathi again, they are classified into two major classes. First one is known as a centrally acting drug. First one is known as a centrally acting drug. So centrally acting drug. So in that, pehla class is centrally acting drug. In that there are again four classes. So first one is a mefenacin congener. Mefenacin congener. So mefenacin was one drug which was used as a skeletal muscle relaxant. Nowadays it is not used, but mefenacin and its congener, right? So they are the post multisynaptic blocker. In the CNS में जो synapse होता है, multiple synapse, इसको ब्लॉक करने वाला है mefenacin and related drugs. इसमें caripropradol, carisopropradol, then chlorzoxazone, it is nowadays also used. Then chlormazone, okay, then next आता है metocarbamol, right? So remember centrally acting drug, इसमें पहला क्लास आएगा आपका mefenacin and its congener, or mefenacin or related drugs. So in that you have carisoprodol, chlorzoxazone, then chlormazone, and chlorocarbamol. So these are the mefenacin
related drugs, centrally acting. Then benzodiazepine में obviously diazepam आता है. Diazepam is a it is a sedative hypnotic drug, you know that, we have seen, but it has a central skeletal muscle relaxant property. Benzodiazepine is also skeletal muscle relaxant. Then GABA mimetic और GABA facilitator, इसमें आता है आपको baclofen, it is also used nowadays, and thiocolchicoside, it is again, these two are the most favorite actually. These two are the most favorite central skeletal muscle relaxant, baclofen and thiocolchicoside. Then central alpha 2 agonist tizanidine, ये भी एक आजकल यूज किया जाता है. तो आजकल यूज में कौन सा है? डाइजेपाम इज यूज्ड एज अ सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स. बैक्लोपेन थायोकोल्चिकोसाइड आपका स्ट्रेन आ गया मसल में तो इसको यूज कर दे. अगर इससे नहीं होता है रिलीव तो फिर ये यूज कर. तो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट टिजानिडिन. तो इसमें 1 2 3 4 क्लासेस है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग. तो मेपेनेसिन कंजेनर्स, बेंजोडाइजेपिन, गाबा माइमेटिक एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट. ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है. तो क्लोरजोक्साजोन, कैरिसोप्रोडोल, देन क्लोरमेजानोन एंड मिथोकार्बेमोल, ये आर द मेपेनेसिन कंजेनर. बेंजोडाइजेपिन आपको याद रहेगा. गाबा माइमेटिक है बैक्लोफेन एंड थायोकोल्चिकोसाइड. Central alpha 2 agonist tizanidine. Now second class is nothing but the peripherally acting drug. Peripherally acting means what? They will block the neuromuscular junction. Peripherally acting. So in that also you have two classes. Those drugs which block the neuromuscular junction known as the neuromuscular blockers. Right? And those which exerts their relaxation property or they directly relaxes the skeletal muscle by acting on a motor end plate. तो directly motor end plate के ऊपर act होते हैं skeletal muscle के, and they decreases the tone. So skeletal muscle relaxation, directly acting skeletal muscle relaxation. Dantrolene होता है, and then quinine and dantrolene. Okay. Now neuromuscular blockers, they will block the neuromuscular junction. In that you have two classes, non-depolarizing or competitive type and depolarizing or non-competitive type. ये देखो, non-depolarizing मतलब ये all these non-depolarizing drugs जो है ना, वो क्या करते हैं? they are the antagonist to the acetylcholine. मतलब ये non-depolarizing or competitive antagonist to the acetylcholine. Competitive antagonist to the acetylcholine. They are non-depolarizing neuromuscular blockers. Depolarizing neuromuscular blockers are non-competitive. इसको बोलते हैं अपन non-competitive. के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके. तो remember non-depolarizing competitive neuromuscular blockers. In that longer acting drugs. Long acting कौन है? D-tubocurarine. Then pancuronium. D-tubocurarine, pancuronium, doxycurium, then pipecuronium. यहाँ पे देखो क्यूरोनियम में पैन है ना, पांदो आप याद रख सकते हो, ट्रिक्स आ गई है ना, पांदो पी डी. तो डी ट्यूबरक्यूरिन, पैनक्यूरिनियम, डोक्साक्यूरियम, पिराक्यूरोनियम. देखो डी ट्यूबरक्यूरिन, पैनक्यूरोनियम, डेक्साक्यूरियम एंड पाइपेक्यूरोनियम. These are the longer acting drug. इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम होगा. ओके, इसमें है वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम ना, सिस्ट्राक्यूरियम, देन रोक्यूरोनियम एंड रैपाक्यूरोनियम. देखो वैक्यूरोनियम ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. एट्राक्यूरियम, सिस्ट्राक्यूरियम ना, रोक्यूरोनियम एंड रेपाक्यूरोनियम. ये आर द इंटरमीडिएट एक्टिंग. एंड शॉर्ट एक्टिंग में आता है आपका मीवाक्यूरियम. शॉर्ट एक्टिंग में कौन आता है? मीवाक्यूरी. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. शॉर्ट एक्टिंग मीवाक्यूरियम. ठीक है.
तो याद रखना है, कैसे भी आप यू कैन यूज सिंपल ट्रिक्स ना, आपके दोस्तों के नाम से ट्रिक्स बना सकते हो. यू कैन मेक अ ट्रिक्स ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो विद द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई कैन ऑल्सो मेक अ ट्रिक्स आई विल शेयर विथ यू, बट दैट मे वर्क और मे नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज जो मेरे ट्रिक्स है वो आपको वर्क करेंगे नहीं करेंगे. दैट्स वाई ये इससे अच्छा है कि याद ही रखो. तो जस्ट ट्राई टू रिपीट 2-3 times, so you will get the easily. तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग पहला है मेपेनिसिन कंजेनर, कैरी है ना, कैरिस है ना, कैरिसोप्रोडोल, देन क्लोरोजोक्साजोन, देन क्लोरोमेजानोन, देन मिथाकार्बामोल है ना, मिथोकार्बामोल. बेंजोडाइजेपिन में आता है आपका डाइजेपिन डेरिवेटिव, बेंजोडाइजेपिन में आता है डाइजेपम, देन गाबा माइमेटिक में आता है बैक्लोफेन एंड थायोकोल्चिकोसाइड्स. गाबा माइमेटिक और दे हैव एक्शंस सिमिलर टू गाबा. गाबा क्या है, गामा अमीनोपेटिक एसिड. तो गाबा माइमेटिक, बैक्लोफेन एंड थायोकोल्चिकोसाइड, सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट टिजानिडिन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. देन सेकंड पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग, इसमें दो आता है, डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलेशन व्हिच एक्ट ऑन अ मोटर एंड प्लेट, जिसमें आता है आपका डेंट्रोलिन सोडियम एंड देन क्विनिन. डेंट्रोलिन सोडियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथर्मिया, malignant hyperthermia we already seen. Quinine is also muscle relation. Quinine is anti-malarial, still it is a muscle relation. Okay? और मेन क्लास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, उसमें आपको दो आता है, नॉन डीपोलराइजिंग और कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, डीपोलराइजिंग और नॉन कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. तो नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, इसको नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं. नॉन कॉम्पिटिटिव ये वाले. तो नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में आता है दो, सक्सिनिल कोलिन आल्सो नोन एज सक्सियामेथोनियम ना, सक्सियामेथोनियम, सक्सिनिल कोलिन और सक्सियामेथोनियम, देन डेकामिथोनियम है ना, सक्सियामेथोनियम और सक्सिनिल कोलिन, डेकामिथोनियम, दे आर द in a non-competitive depolarizing type of skeletal muscle relation, or they are the non-competitive depolarizing type of neuromuscular blocker. क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी कम से कम 3 बार आ चुका है. नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. अब नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में 3 टाइप है, ऑल दे आर द क्यूरारी अल्कोलाइड्स. ये जो नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव टाइप का जो है उसमें सब क्यूरारे अल्कोलाइड्स. इसमें क्या है, क्यूरारे अल्कोलाइड. सो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग डी ट्यूबोक्यूरेन, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम एंड पाइपियोक्यूरोनियम, दे आर द लॉन्गर एक्टिंग. इंटरमीडिएट में क्या है, वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिस्ट्राक्यूरोनियम एंड then procuronium and repacuronium, they are the intermediate. and short acting में आता है आपका mivacurium. So mivacurium is a short acting. Okay. Vacuronium, atracurium, sistracurium, then procuronium and repacuronium, they are the intermediate acting. D-tubercularian, पैंक्रोनियम है ना, पैंक्यूरोनियम, देन डोक्साक्यूरियम, पाइपिक्यूरोनियम, दे आर द लॉन्ग एक्टिंग. तो ये आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए. तो ना अभी देखो न्यूरोमस्कुलर, देखो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग जो है, देयर आर 2 क्लास. फर्स्ट वन इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, सेकंड वन इज अ डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट. सो इन दैट डायरेक्टली एक्टिंग यहाँ पे दो ही है एग्जाम्पल, डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्विनिन. अभी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कौन से, 2 टाइप के हैं. एक होता है नॉन डीपोलराइजिंग और कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, दूसरा होता है ना डीपोलराइजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है ना. डीपोलराइजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में दो ही है, कौन सा, सक्सिनिल कोलिन और उसको बोलते हैं सक्सियामेथोनियम एंड
दूसरा है डेकामेथोनियम, सक्सेमेथोनियम एंड डेकामेथोनियम। सक्सिनिल कोलिन को सक्सेमेथोनियम बोलते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा, देखो एक मूवी आया था बीच में, बहुत दिन हो गए उसको, उसमें फैंटम नाम का एक मूवी था, देखो एक मूवी आया था फैंटम। सो एक मूवी आया था देखो फैंटम, सैफ अली खान एंड कटरीना कैफ। फैंटम नाम का एक मूवी आया था, फैंटम 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 नाम का मूवी था जिसमें सैफ अली खान वाज प्लेइंग ए रोल ऑफ एजेंट, है ना, रॉ एजेंट। सो वहाँ पे एक पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अपना अपना इंडिया में कांड करने वाला टेररिस्ट जाके बैठा है, छुपा है पाकिस्तान में, और वो सैफ अली खान एज अ लीड एक्टर ही इज मूविंग टू द पाकिस्तान बाय क्रॉसिंग द इराक एंड ईरान। सो जब वो वहाँ जाता है उसको सो ही वांट टू न्यूट्रलाइज दैट टेररिस्ट, ही वांट टू किल दैट टेररिस्ट, बट हाउ, है ना। सो वहाँ पे व्हेन सैफ अली खान वाज इन इंग्लैंड इन जेल में जब होता है सैफ अली खान, वहाँ पे एक डेविड हेडली नाम का एक टेररिस्ट रहता है और टेररिस्ट को हेल्प करने वाला रहता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। तो व्हेन, है ना, सैफ अली खान गेट्स इन प्रिजन, वो जेल में जब जाता है तो वहाँ पे डेविड हेडली होता है, वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओके, सो ही इज यूजिंग दिस सक्सिनिल कोलिन। व्हाट इज दैट सक्सिनिल कोलिन? इट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, एंड इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, सक्सिनिल कोलिन का एडवर्स इफेक्ट होता है कि इट विल इंक्रीज द पोटेशियम आयन लेवल इन द बॉडी, एंड दैट इंक्रीज द पोटेशियम आयन लेवल causes the cardiac arrest. Actually this is a paralyzing agent and also it causes the cardiac arrest. That's why it was okay, it can be used as a poison, but आपने किसी को मारना नहीं है, सक्सिनिल कोलिन can be used as a poison, and that was in a movie. Okay, so Saif Ali Khan was using this succinyl choline, and that was succinyl choline to kill the David Headley, named helper of terrorist, the London. So like that, आपको कुछ ऐसे ही स्टोरी बना के या फिर कुछ ऐसे ही करके आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आता है लॉन्गर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, आपने देखा है, राइट। नाउ लेट्स सी द टॉपिक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। सो फर्स्ट इज द सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, so first drug is a diazepam, and diazepam you know very well about the diazepam. Diazepam is a sedative hypnotic drug, but it also has a skeletal muscle relaxant property. Diazepam क्या है? Diazepam is a है ना, sedative hypnotic drug, but also has a central skeletal muscle relaxant property. Central skeletal muscle relaxant property, diazepam. So it will relieve the spasticity in a patient, especially patient which has operation of spinal cord and patient with the cerebral palsy. अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हो चुका है तो इन दैट पेशेंट स्पास्टिसिटी इज देयर, टू डिक्रीज द स्पास्टिसिटी ऑफ पेशेंट हु वाज ऑपरेटेड फॉर स्पाइनल कॉर्ड, स्पास्टिसिटी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, एंड आल्सो यूजफुल इन द स्टिफ मैन सिंड्रोम। स्टिफ मैन सिंड्रोम मतलब क्या है? मैन हुज मसल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, स्टिफ मैन सिंड्रोम। So remember, diazepam is a drug of choice in case of controlling the spasms caused by tetanus toxin. अगर आपको टिटेनस टॉक्सिन का इन्फेक्शन हो गया है, टिटेनस टॉक्सिन का इन्फेक्शन हो गया है, तो मान लीजिए जैसे अपना, है ना, बचपन में देखो, अगर आप खेलते खेलते कोई लोहे का कुछ लगा आपको, तो घर वाले क्या बोलते थे? कुछ आयरन का कुछ लगा आपको, वहाँ पे इंजरी हो गई, तो घर वाले क्या बोलते थे? जाके पहले जा हॉस्पिटल में टीटी का इंजेक्शन ले ले। क्यों? बिकॉज टिटेनस बैक्टीरिया जो होते हैं, दे विल रिलीज अ टॉक्सिन, टिटेनस टॉक्सिन, एंड दैट टिटेनस टॉक्सिन मोस्टली दे आर लोकलाइज्ड इन द metal atom. That's why whenever there is injury due to some metal, you have to go and vaccinate yourself for tetanus toxin. Because of the tetanus toxin,
there is a spasm in the muscles. Spasm होता है muscle में. And to control that, diazepam is a drug of choice. Now central alpha 2 agonist drug जैसे tizanidine. Central alpha 2 agonist tizanidine. बाकी भी ड्रग है जैसे अब बोलेंगे सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में आपने बोला था सर क्लोनिडीन, इथाइलडोपा. दे आर आल्सो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, but they are used in the hypertension. They don't have any muscle relaxant property. Tizanidine is a central alpha 2 agonist, but it will not have any anti-hypertensive property. So tizanidine is central alpha 2 agonist and act as a spasmolytic by decreasing the sympathetic outflow, by decreasing the sympathetic as well as parasympathetic outflow. Then third drug is a baclofen. These are the centrally acting drug. Third drug is a baclofen. So it is a beta 4-chlorophenyl gamma aminobutyric acid. So baclofen क्या है? It is a beta 4-chlorophenyl gamma aminobutyric acid. It is an agonist to the inhibitory neurotransmitter GABA. ये GABA agonist. It is agonist to the GABA. यहाँ पे याद रखना. So diazepam is a GABA A agonist. Diazepam is a GABA A agonist and baclofen is a GABA B agonist. Baclofen is a GABA B agonist. GABA A agonist diazepam, GABA B agonist baclofen. Right? So it is a potent neuronal depressant, mainly act via presynaptic mechanism on the spinal cord. So it is a backup drug for trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia में ये backup drug है, baclofen. So these are the centrally acting drugs. So obviously इनका adverse effect क्या होगा? So they are easily crossing the blood-brain barrier. So इनका adverse effect होता है अपना क्या? Sedation. Sedation is the adverse effect. तो नींद आएगा, ये खाने की वजह से क्या होगा? नींद आएगा. So diazepam, tizanidine, baclofen, all they are having sedative property. So as they are centrally acting drug, they can cause sedation. And okay, so other centrally acting drugs are also there. For example, chlorzoxazone, methocarbamol, orphanadrine, and carisoprodol. Orphanadrine and carisoprodol. So pharmacology is similar to these drugs only. That's why I have not discussed in detail. बस यहाँ पे याद रखना है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में क्या है? डायजेपम, टिजानिडीन, बैक्लोफेन, क्लोरजोक्साजोन, कैरिप्रोड्रोल, ऑर्फेनेड्रिन, मिथोकार्बेमोल और मेपेनेसिन लाइक ड्रग्स. ठीक. नेक्स्ट क्या है? नाउ फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी मालूम है आपको. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड अदर ड्रग्स. सो जैसे मैंने बोला है, आपको दिखाया था मसल. तो मसल है ना, sarcolemma, that is known as a sarcolemma. Outer covering on muscle is known as a sarcolemma. Okay? So and that outer covering है ना, जहाँ पे देखो, this one is known as outer covering of muscle, sarcolemma, right? Now in that muscle there is a neuronal supply. ये nerve आया है, nerve. This is known as a neuromuscular junction. This is known as a neuromuscular junction. It is a neuromuscular junction. What happens during the contraction of muscle? Muscle कैसे contract होता है देखो. तो first step क्या है? When there is a stimulus, यहाँ पे stimulus आ गया, तो what will happen? So at the neuromuscular junction there is a release of acetylcholine. So whenever there is stimulus comes from the nerve to contact the muscle, so acetylcholine is released and it will bind to its receptor. acetylcholine का receptor कौन है? Muscarine and nicotine. तो मस्करीन तो कहाँ पे? मसल में नहीं होता. मस्करीन इज प्रेजेंट इन द समवेयर एल्स, अपने देखा है. बट निकोटिनिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर है, राइट. सो व्हेन acetylcholine is released at a neuromuscular junction, so what it does? So it will increases the permeability of sodium ion in the neuronal cell. Increases the permeability of sodium ion in the neuronal cell. So it will increase the permeability of sodium ion in the neuronal cell. That's why once action potential is generated at a motor end plate, it will spread like a electrical current along with the sarcolemma of muscle fiber. ये पूरा muscle fiber में
ये स्प्रेड हो जाएगा. तो द एक्शन पोटेंशियल विल आल्सो स्प्रेड इनटू द टी ट्यूबल्स. टी ट्यूबल्स मतलब ये ट्रांसवर्स ट्यूबल होते हैं, मतलब दिस इज अ ट्रांसफर ट्यूबल, यू कैन सी टी ट्यूबल. मतलब डीप, ये क्या होता है कि इट विल गो इनटू डीप इन द मसल, दैट्स व्हाई ट्रांसफर ट्यूबल. तो एक्शन पोटेंशियल आल्सो स्प्रेड ऑन द टी ट्यूबल एक्साइटेशन द टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक्साइटिंग द टर्मिनल सिस्टर्नी मतलब अंदर तक, दूर तक मसल में स्प्रेड करेगा इस इम्पल्स, राइट. और सेकंड क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, so it will act on a cell membrane, so that increases the permeability of sodium. So inside cell normally potassium is there, outside cell sodium is there. So when sodium will go inside, there is a, है ना, आपने, मैंने बोला है आपको, inside cell there is a negative potential. When sodium will enter the cell, so they, it causes the depolarization, है ना. So sodium influx in the cell due to acetylcholine. So acetylcholine क्या करता है, acetylcholine will increase the permeability to the sodium via sodium ion channels. Sodium will go inside the muscle cell, sodium अंदर जाएगा तो वहाँ पे depolarization करेगा because of entry of sodium inside the cell. So because of the depolarization, there is a, because of the depolarization there is a more release of calcium ion. There is a release of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum. यहाँ पे there is a, because of the depolarization there is a release of, because of the depolarization there is a release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum, now allowing the more calcium which is free in the cytoplasm, in the cytoplasm. So that calcium will interact, ये fourth stage है वो, that calcium will interact with the fibers, muscle fiber known as actin and myosin. Actin and myosin, they are the separate fiber. So when there is a calcium interaction, they will combine and they will contract the muscle. So calcium will bind to the troponin on the microfilament of muscle. Muscle का ये troponin रहता है, उसमें actin and myosin नाम की filament रहते हैं. So that causes the this, okay, they causing this microfilament to change in the shape. So it will pull the tropomyosin away from the active site of actin molecule, and the exposure of active site allows the sliding the filament. मतलब यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, सिंपली इन अ सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल. देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है. तो योर स्केलेटल मसल इज सप्लाइड विद द नर्व. एक चीज याद रखो, स्केलेटल मसल इज सप्लाइड विद द नर्व. तो व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, क्या होता है. सो neuromuscular junction, at the neuromuscular junction there is a release of acetylcholine. What acetylcholine do, acetylcholine will increase the membrane permeability for the sodium ions. sodium को अंदर डाल देगा, because of the entry of sodium from outside to the inside. So inside cell potential is negative, so due to entry of sodium there is a depolarization. Now that depolarization, that also spreads deep via T ट्यूबल ना, मसल में या डीप में ये जाता है T ट्यूबल से. द डीपोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इनसाइड सेल दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन, तो मोर, ओके. सो फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम है, स्टोर है, कैल्शियम स्टोर इज नथिंग बट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So sarcoplasmic reticulum will release the calcium in the cytosol, free calcium. That calcium is released from the sarcoplasmic reticulum due to depolarization. Now it will interact with the actin myosin filament, which are the contractile protein in the muscle fiber. Okay, that will cause the contraction of muscle. Now muscle relaxant, what they do, they are blocking here. ये तो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी है. दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. नॉर्मली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, भाई, जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा. एसिटिलकोलिन सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर सोडियम
आयन का है ना परमेबिलिटी बढ़ा देगा, सोडियम आयन अंदर जाएंगे, वहाँ पे डीपोलराइजेशन करेंगे और डीपोलराइजेशन कारण क्या होगा है ना, वो एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूबुल के साथ में भी रीच होगा और डीप तक जाएगा है ना इनसाइड द मसल। देन ड्यू टू डीपोलराइजेशन साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, वो कैल्शियम एक्टिन एंड मायोसिन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, दैट कॉजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट कॉजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट muscle relaxant are doing? Muscle relaxant, what they are doing? They are blocking the neuromuscular. They are blocking here. They are blocking here. They prevent the release of acetylcholine. They are acting via two ways. Some drugs they will prevent the release of acetylcholine. Some drug they will cause more release of acetylcholine. है ना, यहाँ पे ज्यादा acetylcholine भी रिलीज हो गया और ज्यादा डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन करते डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, so they increases the more sodium ion inside the cell, so more calcium will be there, more contraction will be there. So initially because of the rapid and persistent contraction, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना मसल का, मसल फ्लैसिड बन जाता है, मसल पैरालाइज बन जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड एंड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, muscle also becomes paralyzed. They are the depolarizing type of muscle relaxant. और neuromuscular blocker तो क्या करेंगे? They will prevent the acetylcholine action, right? This is the mechanism of action we see now. So peripherally acting skeletal muscle relaxant. So first one, physiology of muscle contraction. पहला तो है physiology of skeletal muscle contraction. तो nerve action potential, उसको बोलते हैं NAP. So nerve action potential development is there. So as soon as so release of acetylcholine in a large amount, release of acetylcholine in the large amount from the synaptic vesicle into the motor nerve, synaptic clipped as as a result of nerve impulse. जैसे nerve impulse आएगा, there is a release of acetylcholine from the from the neuron to the synapse. Now in absence of nerve impulse अगर absent है, so small amount of acetylcholine is always there. Small amount of acetylcholine is always there in a synaptic clipped to maintain the end plate potential. मतलब मसल में एक टोन रहता है, मैंने बोला है मसल is not fully released. That muscle tone is because of the that is because of the small amount of acetylcholine. जैसे होता है ना resting membrane potential. So likewise that resting tone of muscle is maintained by small amount of acetylcholine. Now acetylcholine released into synaptic clip that will bind to the nicotinic receptor. जैसे ही आपका सिग्नल आता है, जैसे न्यूरॉन को सिग्नल आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, acetylcholine is released, it will into synaptic clip, it will bind to a nicotinic receptor of motor end plate, which leads to development of end plate, potential, end plate potential for depolarization, that is due to influx of sodium ion. जैसे वो acetylcholine रिलीज होगा वहाँ पे, तो सोडियम आयन का एंट्री बढ़ा देगा. when this when this end plate potential achieved surrounding membrane of muscle fiber gets excited, and which results into development of muscle action potential. Develop होगा due to release of calcium which initiate the muscle contraction as a result of calcium release from the sarcoplasm. आपने ये ऑलरेडी देखा है स्लाइड. now ways to block the muscle impulse, ways to block different है ना, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन ब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हो? देयर इज अ वे टू ब्लॉक द मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन ब्लॉक, आप इम्पल्स ट्रांसमिशन ब्लॉक कर सकते हो बाय यूजिंग लोकल एनेस्थेटिक्स, बाय यूजिंग certain biological toxins like botulinum toxin, by using biological toxins, for example botulinum toxin. So local anesthetic will block this propagation of impulse or biological toxin. Second way क्या है? So inhibit the acetylcholine
inhibit the acetylcholine. Second way is nothing but the acetylcholine synthesis inhibition. The example is a hemicolonium. And third way is the acetylcholine release you can block. So block the release of acetylcholine. So that can be done by botulinum toxin A, beta bungarotoxin. Then third last you can modify the motor end plate. Motor end plate modification interferes with the sarcoplasmic reticulum. Example of drug is nothing but the dantrolene. So ये dantrolene. Now classification of peripherally acting muscle relation we have already seen, but यहाँ पे फिर से एक बार देख लो. So first one is a competitive blockers of acetylcholine at a motor end plate. Example is a D-tuberculin, D-tuberculin, atracurium, vacurinium, and galamine. Then persistent depolarizer. They are known as a competitive blocker or non-depolarizing type of neuromuscular. The persistent depolarizer at the muscle end plate, succinyl choline. Succinyl choline क्या है? It is a non-competitive depolarizing type. है ना, ये depolarizer है और non-competitive. पहले वाले competitive है, non-depolarizing है. और acetylcholine inhibitor at a motor nerve terminal, botulinum toxin, directly acting on a skeletal muscle, वो है dantrolene. ठीक है. You can see the structure of drugs. D-tuberculin. तो ये D-tuberculin क्या है? It is alkaloid from curare. So it is alkaloid from isolated from curare species. Curare नाम का एक plant है, उससे ये alkaloid isolate किया है. So in the Africa, there is a curare plant, and a lot of Africans, they were using this curare as a paralyzing agent for the hunting. ना वो जंगल में जाते थे लोग शिकार करने के लिए. क्या करते थे? तो जंगल में हंटिंग करने के लिए, है ना, इट इज नॉट इजी टू हंट द एनिमल तो वो भागता है. एनिमल को हंट करने के लिए क्या है? सो दे यूज टू टेक एरोज, और एरोज के ऊपर क्या लगाते थे? ये क्यूरारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट लगाते थे. एज क्यूरारे प्लांट एज अ D-tuberculin विच इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. सो जैसे ही वो एरो हिट होता था एनिमल को, तो एनिमल को हिट होने के बाद एनिमल मरता तो नहीं था, लेकिन उसके मसल पैरालाइज होते थे और वो भाग नहीं सकता था. राइट. तो अफ्रीकन पीपल दे वेर यूज टू यूज दिस ट्यूबरक्यूलिन फॉर हंटिंग पर्पस, है ना. तो वहां से D-tuberculin का फार्माकोलॉजी, वहां से ये इसका डेवलपमेंट है. डीमे है ना, डेकामेथोनियम का ये स्ट्रक्चर है, सक्सिनिल कोलिन का ये स्ट्रक्चर है. नाउ D-tuberculin, D-tuberculin, so it is a curare alkaloid. D-tuberculin, so it is a curare alkaloid. डेक्स्टो फॉर D, है ना. डेक्स्टो फॉर D जो है उसका मतलब डेक्स्टो. ट्यूबो मीन्स व्हाट इज ट्यूबो? साउथ अमेरिकन दे वेर यूज टू स्टोर इन ट्यूब्स. ये ट्यूब्स में रखते थे उसको, है ना. साउथ अमेरिकन दे यूज टू स्टोर इन ट्यूब, सो दैट्स व्हाई D ट्यूबो. एंड क्यूरारेन मतलब क्या? क्यूरारे अल्कोलाइड्स. तो इट वाज यूज्ड एज अ एरो पॉइजन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ D-tuberculin. It will block the acetylcholine competitively. It will block the acetylcholine competitively by combining with the nicotinic receptor on a motor end plate. मतलब जहाँ पे नर्व मसल का कनेक्शन है. It causes the temporary paralysis that can be reversed by increasing the amount of acetylcholine. मतलब ये क्या है? Competitive type of neuromuscular blocker. Competitive type depolarizing. Competitive type depolarizing neuromuscular blocker. Pharmacological actions of these D-tuberculin on a skeletal muscle. Initially motor weakness is there, followed by flaccid paralysis due to contraction. ज़्यादा contraction के कारण, ज़्यादा contraction के कारण, ज़्यादा acetylcholine के कारण वहाँ पे depolarization बहुत ज़्यादा होता है और muscle paralysis होता है. वो small rapidly moving muscles of the animals like finger, toes, eyes, they are affected most. तो छोटे छोटे मसल है, skeletal muscle,
छोटे मसल जो है स्केलेटल मसल, इनिशियली muscles of finger, toes, eyes are affected first, and so it make difficult or impossible to animal to do the motor task, जैसे रनिंग हो गया, भागना हो गया. तो then after that muscle of limb, हाथ पैर के मसल, neck, trunk muscle, they are affected. It is followed by intercostal muscle. तो इनिशियली डी ट्यूबरकुलर आपके जो छोटे छोटे स्केलेटल मसल है उसको पैरालाइज करेगा, उसके बाद में है ना, उसके बाद में हाथ पैर के, नेक के, ट्रंक के मसल को अफेक्ट करेगा, लास्ट में इंटरकोस्टल मसल अफेक्ट करेगा, डायफ्राम. ज़्यादा डोज लिया तो मर भी सकते हैं आदमी बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल, सांस नहीं ले सकते. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर क्या इफेक्ट है? इट कैन प्रोड्यूस अ ब्लॉकेज of both autonomic ganglia and adrenal medulla, which leads to decrease in the blood pressure. Also, ये curare alkaloids है, it causes the histamine release, which also contribute to decrease the blood pressure. तो histamine releaser है, it will release the histamine from the mast cell. Histamine का store होता है mast cell. It causes the bronchospasm. So this histamine release increases the bronchospasm, increase the salivary tracheal and bronchial gastric acid secretion. ये secretion भी बढ़ाता है, जिससे acetylcholine की action है. ADME, absorption distribution metabolism energy, it is not significantly absorbed in the GIT because क्या है, it is a quaternary ammonium compound, और polar जो molecule होते हैं वो absorb नहीं होते GIT से, highly polar molecule absorb नहीं होते. It is a widely distributed and repeated dose administration of tuberculin may cause cumulative toxicity. रिपीटेड डोज में यूज नहीं करना है, रिपीटेड डोज में यूज किया तो एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में टॉक्सिटी, डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. नाउ देखो यहाँ पे है ना, डी ट्यूबरक्यूलिन, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 4 to 6 मिनट है. ड्यूरेशन होता है इसका 3 to 4 hours, 3 to 4 hours मीन्स 80 to 120 minutes. एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड किडनी. तो क्या इट इज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर आल्सो, इट आल्सो ब्लॉक द वेगस नर्व एंड आल्सो कॉजेज द हिस्टामाइन रिलीज. देन उसका ही डेरिवेटिव देखो, सेमी डेरिवेटिव पैनक्यूरोनियम, again it is metabolized by kidney, duration of action and onset similar है. Again it is a ganglionic blocker, vagal blocker, and but it will not release the histamine, so it has advantages over D tuberculin. Pancuronium will not release the histamine. Then vecuronium, उसके भी नियर अबाउट काइनेटिक सेम ही है, metabolized by liver, so no ganglionic blockage, vagal blockage and histamine release, so no tachycardia. So it is one of the most commonly used skeletal muscle relaxant in the surgery, anesthesia and surgery. vecuronium, ठीक है. बाद में procuronium metabolized by liver, उसके बाद में ये भी vecuronium के बाद में आता है. इसके बाद में डॉग्स है क्यूरियम, इट आल्सो कॉजेज द हिस्टामाइन रिलीज, एडवर्स इफेक्ट है उसका. नाइट्रोक्यूरियम, मिवाक्यूरियम, इसके मिवाक्यूरियम के तो मिवाक्यूरियम इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है, याद रखना है. सक्सिनिल कोलिन इज a competitive, is a non-competitive depolarizing type of neuromuscular blocker, because ये जो tuberculin alkaloids है, they are the competitive non-depolarizing, curare alkaloids are the competitive non-depolarizing type of alkaloid, non-depolarizing type of neuromuscular blocker, whereas the succinyl choline is a non-competitive depolarizing type of neuromuscular blocker, depolarizing. It also
गैंग्लियनिक स्टिमुलेशन एंड हिस्टामाइन रिलीज. ये कंपेरेटिव स्टडी है. एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस ड्रग्स, ट्यूबरक्लोराइन एंड रिलेटेड ड्रग्स. तो एडवर्स रिएक्शन क्या है इनके? तो दे कैन कॉज हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ड्यू टू इनिबिशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल. अगर इंटरकोस्टल मसल का पैरालिसिस कर दे, दैट रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ. नाउ न्यूस्टिकमेन इज यूज्ड एज एंटीडोट. देखो क्वेश्चन आ सकता है. इन केस ऑफ क्यूररी पॉइजनिंग, in case of curare overdose, neostigmine is an antidote. It can cause reversal of paralysis, but it can increase the bronchospasm and acid secretion. Now, hypertension is another adverse effect, which are not serious and can be treated by IV fluids. Now, other competitive neuromuscular blockers, उसमें long acting drug है, से roxacuronium, pancuronium, pacuronium, pipecuronium, ठीक है. इंटरमीडिएट एक्टिंग है तो एट्राक्यूरियम एंड रोक्यूक्यूरियम. शॉर्ट एक्टिंग में है आपका निवाक्यूरियम, ये ऑलरेडी हो चुका. और सक्सिनिल कोलिन, डिटेल्स ऑफ सक्सिनिल कोलिन. ये एक्चुअली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. यू कैन एक्सपेक्ट 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन द GPAT Niper and organisms. So most of the time they used to ask question from classification part or maximum mechanism, right? So succinyl choline mechanism of action, partial agonist to the acetylcholine. Partial agonist मतलब ये partial agonist will also act as antagonist. So produces the skeletal muscle depolarization by acting on a membrane channels which result in the fasciculations. Fasciculation मतलब क्या? Initially transient muscle contraction करता है. Initially मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, बाद में परसिस्टेंट मसल परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन करता है इनिशियली, है ना. तो इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट. मतलब क्या, जाके थोड़ा सा एगोनिस्ट करेगा, नॉट फुल एगोनिस्ट. तो मैक्सिमल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बस सिर्फ उसको टच करके आएगा. इनिशियली डिपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड लेटर ऑन मसल रिलैक्सेशन. तो इनिशियली by acting on a membrane it causes the muscle fasciculation preceding the skeletal muscle paralysis. बाद में relax करेगा paralysis. Metabolized slowly by pseudocholinesterase. तो cholinesterase से ये metabolize होता है. Causes the persistent depolarization during the muscle, during which muscle is insensitive for the ECH release from nerve ending and remains paralyzed. Pharmacological actions क्या है इसके? स्केलेटल मसल के ऊपर क्या एक्शन है? कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम डिपेंडेंट ब्लॉक ड्यू टू, है ना, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम डिपेंडेंट ड्यूअल ब्लॉक, डीपोलराइजिंग फेज 1 which later becomes नॉन डिपोलराइजिंग फेज 2. मतलब ये 2 फेज में एक्ट होता है. तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फेज 1 ब्लॉक करेगा, मतलब ना डिपोलराइजेशन ब्लॉक. लेटर ऑन नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर बनता है. इनिशियली इट विल एक्ट एज अ डिपोलराइजिंग blocker, non-competitive depolarizing blocker. Later on it will block as a non-depolarizing phase 2 which can be blocked by neutropenia. तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया. एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस सक्सिनिल कोलिन इज हाइपरकैलेमिया. हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल. सो because of the prolonged depolarization which leads to shift of intracellular potassium to the extracellular one, and this increased potassium can cause cardiac arrest. Increased potassium can cause cardiac arrest. हार्ट को स्टॉप कर दे. जैसे डेविड हेडली का मैंने स्टोरी बोला आपको, जैसे सैफ अली खान फैंटम पिक्चर में, तो वो जाता है जेल में और वो वहाँ पे मतलब टॉयलेट वॉचिंग का काम करता है. और जब वो डेविड हेडली उसका नहाने का समय होता है तो उसके नहाने के समय में उसके शावर में ये सक्सिनिल कोलिन डाल देता है. और वो उसको जैसे ही वो शावर लेता है, इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट पॉइजन, और वो सक्सिनिल कोलिन की वजह से उसको पैरालाइज हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, मर जाता है. मतलब ऐसे नहीं मारा उसने, वहां जाके वैसे ना. रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगल न्यूक्लिया एंड सिम्पैथिक गैंग्लिया.
miscellaneous action in large doses, it may cause muscarinic as well as ganglionic blockage. ADME क्या है इसका? It is metabolized by plasma and liver by pseudocholinesterase or succinyl choline. Succinyl choline has a weak neuromuscular blocking effect. It is metabolized to succinic acid and choline. Succinic acid and choline is a metabolites. Adverse reaction क्या है? Apart from allergic reaction, cardiac arrest, very important, cardiac arrest and arrhythmia. Succinyl choline apnea, malignant hypothermia, मेटल ऑप्शन इसका डेंटली. थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? इसका यूज है इन कॉम्बिनेशन फॉर, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन with anesthetic agent to achieve adequate muscle relaxation in electroconvulsive therapy and also used in the spastic disorders. नेक्स्ट होता है बोटुलियम टॉक्सिन टाइप ए. ये क्या है? एक टॉक्सिन है, बोटुलियम बैक्टीरिया से आता है. Irreversibly bind with the pre-synaptic cholinergic sites and it is inhibitor of acetylcholine. We have already seen in the motor neuron terminal. So it is used in the spasmodic torticollis, hemifacial spasm, then some muscular dystonias. Also used for cosmetic purpose to reduce the wrinkles on a face and neck. तो ये बोटुलियम टॉक्सिन आपके फेस के ऊपर रिंकल्स है ना कम करने के लिए यूज करते हैं, टू रिड्यूस द रिंकल्स ऑन अ फेस एंड नेक. बोटुलियम टॉक्सिन बी भी होता है एक, तो बोटुलियम टॉक्सिन बी व्हेन यूज्ड है ना व्हेन देयर इज अ रेजिस्टेंस टू टाइप ए. अगर किसी को टाइप ए बोटुलियम टॉक्सिन से रेजिस्टेंट हो रहा है, मतलब मसल रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो टाइप बी यूज करें. नाउ अनदर टॉक्सिन इज देयर, ओना बोटुलियम टॉक्सिन ए. Ona botulinum toxin is recently approved for headache in the adult patient with the chronic migraine. तो migraine में ona botulinum toxin भी यूज किया. Now next drug, last drug है dantrolene. Dantrolene is a muscle relaxant, acts by uncoupling the excitation from contraction of muscle. ये lastly at a motor end plate act होता है. It prevent the calcium release, from sarcoplasmic reticulum store and prevent the muscle contraction. Therapeutically, it is used in the spasticity and hyperthermia. It is used in the spasticity and malignant hyperthermia. तो ये यूज है आपका डैंट्रोलिन का. ठीक है. और सक्सिनिल कोलिन देखो क्या करता है. सक्सिनिल कोलिन, मैकेनिज्म ऑफ सक्सिनिल कोलिन. व्हाट सक्सिनिल कोलिन डू? Succinyl choline, it will act on a nicotinic receptor at a motor end plate neuromuscular junction. So it causes the membrane depolarization. That's why initially यहाँ पे fasciculations होता है, muscle contraction होता है. Later on persistent depolarization which results in the flaccid paralysis of muscle. इसको बोलते हैं phase 1 block. Later on ये क्या करता है? At a higher doses it will cause dual block. फेज 1 ब्लॉक तो करता है ना. फेज 2 ब्लॉक करता है, नॉन डिपोलराइजिंग, दैट इज रिवर्स्ड बाय एंटीकोलिनेस्टेरेज. एंड नाउ कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ना, लाइक डी ट्यूबरक्यूरारेन एंड गैलामाइन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन compete with the acetylcholine for nicotinic receptor at a post-synaptic membrane. Acetylcholine की जगह ये जाते हैं and they will not cause any depolarization, but they cause a flaccid paralysis and muscle relaxation. Non-competitive depolarizing type of muscle relaxation to depolarizing neuromuscular blockers. For example, है ना, succinylcholine और succinylcholine और succinylcholine binds with the nicotinic receptor of skeletal muscle, so causes the depolarization of receptor like acetylcholine, leads to transient twitching and fasciculation, and later on causes the persistent depolarization, which causes the paralysis of muscle, block the neuromuscular transmission and desensitization of receptor for agonist action. And that's how it causes the muscle relaxation.
ये मसल रिलेक्सेशन है. तो नेक्स्ट चैप्टर विल सी द ग्लाइकोमा प्रोबेबली द डे आफ्टर टुमारो. तो अभी क्या है कि मसल रिलेक्शन आपका हो चुका है. मसल रिलेशंस में आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. अगेन यहाँ पे देख लो, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. ये क्लासिफिकेशन के बाद में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में मैकेनिज्म एंड सेंट्रली एक्टिंग में, मतलब मैकेनिज्म बस उनका ही इंपॉर्टेंट है. किसका? जैसे फॉर एग्जांपल है ना, क्यूरारी अल्कोलाइड्स, तो दे आर नॉन डीपोलराइजिंग competitive type of neuromuscular blocker. They are a competitive inhibitor of acetylcholine. And दूसरा होता है नॉन डीपोलराइजिंग, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग, सक्सिनिल कोलिन एंड डीमा, है ना, एकामिथोनियम. ये दोनों, इनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. बाद में डेंट्रोलिन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. और बाकी सेंट्रल एक्टिंग तो दे आर गाबा एगोनिस्ट. तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं. यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस विल एंड द चैप्टर. तो टुमारो प्रोबेबली आई विल नॉट टेक लेक्चर. अगर जल्दी आता हूँ मैं विल टेक, अदरवाइज जल्दी आता हूँ तो मैं अपन साइज रिडक्शन चैप्टर ले लेंगे. सिंपल चैप्टर है साइज रिडक्शन. तो सी यू टुमारो. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. Thank you.